As all of you know that we have completed our previous topics, that is sex determination in humans and in other organisms, as well as mutation. Today we are going to discuss about genetic disorders, but before discussing about that, we are going to cover another topic, that is pedigree analysis. Okay, in pedigree analysis we are going to discuss how and why we use this analysis. As all of you know that there are different type of disorders which are already present in humans, okay, and that too from a long time, okay. And how do we know this? We know this because maybe because we know that our grandfather or father's daughter, or like this, some relatives of us were suffering from this disorder, and after a few generations it was not known, but still you will see that in coming generation it can again, you will see same disorder in different persons in that family. Okay, that means that disorder was there. Okay, but in between certain generations it was not observed, or you can say that in scientific terms we can say that it was not expressed by that gene. Okay, but it is there. So अगर हम किसी डिसऑर्डर को किसी फैमिली में स्टडी करना चाहते हैं, तो वो स्टडी करने का तरीका है, उसी को हम पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं. ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस क्योंकि हमें पता है कि हम मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स थे उसकी तरह से हम इन पैटर्न्स को स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमन में हम कंट्रोल्ड क्रॉसेस जैसे उन्होंने पी प्लांट्स में किए थे, उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग और यू कैन से प्योर लाइन्स डेवलप किया था, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने इसमें हम ह्यूमंस में नहीं कर सकते, कंट्रोल क्रॉसेस और ये सब चीज़ें परफॉर्म नहीं हो सकती. इसीलिए ये डिसऑर्डर्स को स्टडी करना एक पैटर्न में बहुत डिफ़िकल्ट था. ठीक है, लेकिन ये पता है कि कुछ पर्टिकुलर फैमिलीज़ की हिस्ट्रीज़ में देखा गया था कि कुछ डिसऑर्डर्स प्रेजेंट थे और वो कुछ जनरेशन्स के बाद रीअपियर हुए. ठीक है, टू स्टडी वी टू स्टडी ऑल सच थिंग्स वी नीड टू हैव सम ऑल्टरनेटिव. हमें कोई किसी ऑल्टरनेटिव की ज़रूरत थी. ठीक है, और ये जो एनालिसिस ऑफ ट्रेट्स हम करते हैं, यानी इन ट्रेट्स का किस में प्रेजेंट था, फिर किस जनरेशन में ये रीअपियर हुआ, कितने जनरेशन्स के बाद फिर नहीं मिला, ये सारा जो एनालिसिस है, इस पैटर्न को ही हम कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस. तो हम एक ही फैमिली के कई सारे जनरेशन्स को इसमें स्टडी कर सकते हैं और इन ट्रेट्स को भी. ओके, एंड व्हेन वी स्टडी same such type of traits in a family, that means in one family, that means that can be done only by drawing a family tree. तो पेडिग्री एनालिसिस करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो हमें एक फैमिली ट्री को ड्रॉ करना पड़ता है. ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि जो पेडिग्री एनालिसिस है, इट इज़ अ टाइप ऑफ, और यू कैन से इट इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट टूल which is used by us to study or trace the inheritance pattern of a particular trait. वो पर्टिकुलर ट्रेट हम क्या हो सकता है, हम डिसऑर्डर को ले सकते हैं या किसी ट्रेट को भी हम स्टडी कर सकते हैं. ओके, सो दैट्स वाई पेडिग्री एनालिसिस आर यूज्ड. ओके, नाउ लेट्स सी हाउ. Okay, now if you will look at this, here they have very nicely shown, it's a family tree. Okay, in this family tree you can see many generations are shown by the branches. In the similar manner, if we will study a pedigree analysis, you will see such type of diagrams showing different branches. This is first generation, this is second generations, like this. So we have got different generations. Okay, so we can study different generations by making such type of family tree. Okay, so I have discussed right now that in humans it was not possible the way Mendel explained in pea plants. It was that the study in that way is not possible in humans because of controlled crosses. Controlled crosses cannot be performed in humans, so it is not possible. Okay, so it was for studying such inheritance pattern, they used family history, and which helped in making a family tree. Okay, so what is pedigree analysis? An analysis of genetic traits
in several generations of a family is called pedigree analysis. Okay, जब हम किसी जेनेटिक ट्रेट को बहुत सारी जनरेशन्स तक किसी एक फैमिली में स्टडी करते हैं तो हम उसको पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं. ओके, नाउ इफ यू विल लुक एट दिस इज अ फैमिली ट्री where they are representing each branches, different branches are representing different levels, or you can say that different levels are representing different generations. Okay, so this is a family tree for pedigree analysis. Mostly we use pedigree analysis to trace different abnormalities or disorders. Okay, so when we study human genetics, study of human genetic is very important because certain mysterious diseases or disorders were traced through human genetics only. Okay, and that too was possible through pedigree analysis. Okay, now moving on, when we talk about pedigree analysis and for making a family tree, here you can see different symbols are used: square, circle, and different colors are used. Okay, why we use such symbols and why we have drawn such branches, that is important. Okay, so when we have to draw a family tree, we need to make different you can say different symbols are used for representing it. Okay, so for representing any tree, we need to draw. For males we always draw square, for females you will always draw circle. So we don't use all these different symbols. Here you can see again, if we want to draw affected individuals, here red color is used, but you can use shades. Okay, so you can draw a square and you can shade it with pencil, so that shaded block shows affected individual. Okay, along with it, if you look at this, there is another sign. This symbol is again used. These are parents, okay, and these are children below it. So if we are showing children's, we have to use these symbols. For daughter we will use circle, and for drawing son we will use square. Okay, that is for male and female. तो अगर आप एक पेडिग्री एनालिसिस चार्ट बना रहे हैं तो आपको ये सिम्बल्स याद करने हैं. ठीक है, सो जस्ट आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन. फॉर मेल स्क्वायर, फॉर फीमेल्स सर्कल, फॉर अफेक्टेड इंडिविजुअल्स mostly shaded ones. Okay, and these branches are used. Okay, and if you want to show affected any affected child, you can show it like this. Okay, above you can see parents are shown, ये parents हैं, और नीचे आपको एक shaded structure दिख रहा है square, that is affected male child. In the similarly you can draw affected female child by drawing a circle that is darkened or shaded. Okay, now these are certain, I'm not showing all these symbols because very less symbols are used. And you will use it in the other way. Okay, now looking at this pedigree analysis, always remember that pedigree analysis or pedigree chart helps us to understand a very important thing, whether a trait is dominant or recessive. So this is very important. Pedigree analysis of, here you can see this is myotonic dystrophy. Okay, this person is affected by myotonic dystrophy disease, and he is, the most important thing is that he is autosomal dominant trait. This trait or this disease or disorder is autosomal dominant trait. That means this disorder does not depend upon sex chromosome. It will not affect XX or XY. Okay, it will affect not these chromosomes but only autosomes. Okay, autosomes. Fine, so this is autosomal dominant trait is shown here, and I will explain you later how can we identify autosomal and the other one. Okay, in the other one you can see sickle cell anemia. So this is sickle cell anemia, this one, and this is known as autosomal recessive trait. Okay, autosomal recessive trait. So like this we will discuss more disorders. Now there is a chart
given. This is just one example which we are going to discuss later. Here you can see that hemophilia is one example. Hemophilia is a disease which was identified in Queen Victoria, okay, and this Queen Victoria was suffering from hemophilia, but later on when it was the inheritance pattern was studied in the family tree, it was found that this is a genetic disorder which was passed on to many generations. So here you can see Prince Albert and Queen Victoria is shown, and then again many generations are shown here. Okay, so in this way pedigree analysis helps us to trace or tell an individual about the probability, that what is the probability, कितने chances हैं that जो offsprings हैं वो उस disorder से affected होंगे. ठीक है, तो ये एक तरह से पेडिग्री एनालिसिस क्या करता है, फैमिली चार्ट में ये फैमिली ट्री, पेडिग्री एनालिसिस एक फैमिली ट्री के थ्रू किया जाता है, और उस फैमिली ट्री से हम ये समझ सकते हैं कि इसका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कैसा है. क्या ये ट्रेट डोमिनेंट है, क्या ये ट्रेट रिसेसिव है, क्या ये ट्रेट ऑटोसोमल है, क्या ये ट्रेट सेक्स लिंक्ड है. अगर सेक्स क्रोमोसोम्स को अफेक्ट करता है डिसऑर्डर, यानी ये डिसऑर्डर वाला जो जीन है, ये जो जीन है, जो अफेक्टेड जीन है, अगर XX या XY क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है तो दैट मीन्स ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है. ठीक है, ध्यान से सुनेंगे इस बात को कि अगर कोई अफेक्टेड जीन XX या XY क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है तो हम उसको सेक्स लिंक्ड डिजीज़ कहते हैं, सेक्स लिंक्ड. ठीक है, तो सेक्स लिंक्ड इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर जो डिसऑर्डर्स जो अभी आप पढ़ेंगे वो डिसऑर्डर्स जो हैं वो X क्रोमोसोम से लिंक्ड है. तो X क्रोमोसोम एक सेक्स क्रोमोसोम होता है, वो सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है, इसीलिए हम उसे सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम कहते हैं. ठीक है, और सेक्स लिंक्ड डिजीज़ कहते हैं, सॉरी सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर कहते हैं. ठीक है, सो या तो वो सेक्स लिंक्ड होगा, और सेकंड कैटेगरी कौन सी है, या तो वो ऑटोजोमल होगा, यानी ऑटोजोम्स, वो जो डिसऑर्डर जो अफेक्टेड जीन है वो ऑटोजोम्स में, यानी ऐसे क्रोमोसोम्स जो ऑटोजोम्स होते हैं, ऑटोजोम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सेक्स को डिटरमाइन नहीं करते, उन पर प्रेजेंट होगा. सो पेडिग्री एनालिसिस हैज़ शोन that the genetic disorders are of basically two types. Number one, broad classification is Mendelian disorder as well as chromosomal disorder. Okay, so in Mendelian disorder we can have autosomal disease or we can have sex linked disease. ऑटोजोमल और सेक्स लिंक डिजीज़ या तो डोमिनेंट होगा या फिर वो रिसेसिव होगा. ठीक है, सो वी विल डिस्कस अबाउट इट मोर in next video. Thank you.